हस्ती पधारी है जो ब्रह्मा कुमारी संस्था के अनेक भाई बहनों के लिए रोल मॉडल हैं। आदरणीय आशा दीदी जी बाल्यकाल से ही अपनी आध्यात्मिक रुचि और ईश्वरीय वरदान के कारण ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ गई हैं। मैं आमंत्रित करती हूं उस महान विभूति को जो इस संस्था में बहुत अच्छे खुश मिजाज व्यवहार और अपनी ओजस्वी वाणी और अनेक विषयों पर मास्टरी के कारण सबसे ज्यादा अच्छे वक्ता के रूप में विख्यात हैं। वैसे तो इनका परिचय देना मेरे लिए संभव नहीं है क्योंकि इनका बायोडाटा इनकी बहुआयामी पर्सनैलिटी के वर्णन से भरा हुआ है जिसको सुनाने में ही 70 की अवधि समाप्त हो जाएगी। फिर भी मैं दीदी जी के बारे में कुछ अंश आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। आपने अपना जीवन 1972 में पूर्ण रूप से ईश्वरीय सेवार्थ समर्पित कर दिया। आप मूलनिष्ठ समाज की स्थापना के अर्थ डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन के साथ अपने लक्ष्य की ओर बहुत ही मजबूती के साथ आगे बढ़ी। संस्था के बहुत बड़े लेवल के देश विदेश के कई स्पिरिचुअल प्रोजेक्ट में आपका बहुत बहुत योगदान रहा है। आपने बेंगलोर यूनिवर्सिटी से टॉपर के रूप में MA इन सोशियोलॉजी विद गोल्ड मेडल किया है। ब्रह्मा कुमारी संस्था में डेडिकेशन से पहले आपने बेंगलोर के एक फेमस कॉलेज माउंट कार्मल डिग्री कॉलेज में भी पढ़ाया हुआ है। आप बहुत अव्वल दर्जे के ट्रेनर होने के नाते मेरी जैसी हजारों बहनों को ईश्वरीय सेवार्थ तैयार कर चुकी हैं। आपने बहुत सारे ट्रेनिंग कोर्सेज बनाए हैं और ट्रेनिंग कराते भी हैं जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट, यूथ लीडरशिप, विनिंग ओवर ईगो एंड एंगर मैनेजमेंट एक्स्ट्रा। आप राजयोगा मेडिटेशन की गहन तपस्या के साथ आधार पर जीवन को बदलने की क्षमता विकसित करने वाली वरिष्ठ योगी हैं। आपके बहुत सारे प्रोग्राम रेडियो एंड टीवी चैनल पर प्रसारित होते हैं, स्पेशली संस्कार टीवी और पीस ऑफ माइंड टीवी पर तो नियमित रूप से टेलीकास्ट होते हैं। प्रेजेंटली आप दिल्ली के नजदीक हमारे बहुत बड़े रिट्रीट सेंटर की ओम शांति रिट्रीट सेंटर के डायरेक्टर हैं। आप एडमिनिस्ट्रेशन विंग के चेयरपर्सन हैं। आशा दीदी जी को बहुत सारी विशेषताएं तो गॉड गिफ्ट के रूप में प्राप्त हैं। आपसे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो अब मैं दीदी जी से अनुरोध करूंगी कि वो आज के विषय से हमें अवगत कराएं। आदरणीय आशा दीदी जी। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। So how are you? Fine. This is a common answer. Yes. So you're sitting in an exclusive place, very special place. So special answer has to be there, no? Yes. Pardon? Healthy and wise. Yes. Healthy, wealthy and happy. Huh? In one of the lessons that we received, it was said generally people need what? They need good health, they need wealth also, because without wealth we cannot do anything, you know. It is a necessary thing, we shall be able to accept it. I don't believe the wealth is not necessary. I do believe wealth is necessary. And then happiness. Happiness is also must. If you have everything else in the world and you don't have happiness, what good it is? Health is of no use. Wealth is also of no use because there is no inner happiness. I don't think happiness can be outside also. Happiness is an intrinsic value of a soul. It has to be from within only. But the fourth element, which I did not intend to talk to you, I did not plan, it never occurred in my mind at that time, but when I heard you saying healthy and wealthy, then this struck my mind. It was said
to have health, wealth and happiness, what's the fourth thing that we need to have? And it was said holiness. And when we say holiness, we do not mean leaving our families, leaving our world, going and residing in jungles just for contemplating on something, having only dhyan. That is, no. Holiness means something. Holiness, I feel, it is polishing our own good intrinsic qualities. I take it that way. Where you are very clean in your mind. जिसको हम लोग अगर हिंदी पवित्र, शुद्ध, निर्मल, स्वच्छ, transparent. What else is holiness? What else? If I reach heights of meditation, but simultaneously I get wild also, I get angry also, would you like to call it holiness? And it is a pity. Somehow, I am talking to you just as a lay person. जब हम लोग बचपन में कहानियाँ सुनते थे ऋषियों की, मुनियों की, तो कहानी में आता था फलाना ऋषि बहुत साल तपस्या किया, फिर कोई ऐसी बात हुई उसने उसको श्राप दे दिया। तो आई वॉज वेरी स्मॉल, दिमाग में एक क्वेश्चन आता था, इतना अच्छा तपस्वी, इतना पहुंचा हुआ व्यक्ति, इतना बड़ा, छोटी सी कोई बात हुई तो उसको श्राप दे दिया। छोटी सी बात को टॉलरेट नहीं कर सका, एब्सॉर्ब नहीं कर सका, माफ नहीं कर सका। चलो वो टॉलरेट ना करे, कुछ नहीं, माफ तो कर दे, वो भी नहीं कर सका, श्राप दे दिया। तो बचपन में ऋषि मुनि और उनके साथ फिर ये जो है एस्पेक्ट क्रोध वाला, वो जैसे दिमाग में बैठ गया कि ऋषि मुनि होते हैं वो क्रोधी होते हैं। फिर और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बच्चा ऑब्जर्वेशन से सीखता है, एक दूसरे से बातचीत करके सीखता है। फिर हमने वो भी पढ़ा कि भाई ऐसे था, ऋषि मुनि थे और तपस्या करते थे, शेर आता था उनके इर्द गिर्द जाके चला जाता था, कुछ भी नहीं बोलता था, शेर के साथ खेल रहे थे। ये भी हम लोग पढ़ते हैं तपस्वी उसमें ऋषियों में कि शेर आया और शेर के साथ वो बच्चा खेल रहा था, किसका, भरत का कहते हैं ना, जो शेर के साथ खेलता था। तो वो भी एक चीज है। क्या चीज है, क्या चीज है? फिर लेटेस्ट मॉडर्न रोमन एम्पायर की कहानी पढ़ते थे, तो अभी सब फ्लैश हो रही है साथ साथ, आई एम टॉकिंग टू एंड दे आर फ्लैशिंग। तो रोमन एम्पायर में कहानी पढ़ते थे कि भाई क्या हुआ, एंडोक्लीस ने कुछ ऐसी बात की तो उसको सजा मिली, शेर के उसको कटघरे में डाल दिया ताकि शेर आए उसको कच्चा खा जाए। मैंने वो जगह देखी है रोम में जहां पर ये लोग मनुष्य को शेर के आगे डालते थे
और ऐसे बैठ करके वो लोग सब देखते थे, यू नो, सो क्रूअल पीपल। कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स, भट्टियां जगती थी, जो फर्नेसेस, उसमें मनुष्य को ऐसे डाल देते थे। आई हैव सीन दोस प्लेसेस। ऑफ कोर्स नाउ-a-days दे डोंट डू एनीथिंग, लेकिन वो मैंने देखी है। इलेक्ट्रिक चेयर के ऊपर व्यक्ति को बिठा देते थे, और इलेक्ट्रिक चेयर में करंट जब पास होता था, यू कैन जस्ट इमेजिन, एक करंट हमको लगता है तो हमारा क्या हाल होता है। व्यक्ति को उसके ऊपर बिठा देते थे। दी क्रूएल लोग थे। तो एंड्रोक्लीस के साथ भी ऐसे हुआ था। उसको शेर के कटघरे में डाल दिया तो एंड्रोक्लीस ने सोच लिया कि मेरी तो फाइनल डेथ है। तो जब शेर आ रहा था तो उसके पाँव में ना कांटे थे, और वो शेर बेचारा थोड़ा दुखी था। एंड्रोक्लीस ने क्या किया, उसके कांटे निकाले, पाँव धोए, घाव साफ किया, उसको पानी पिलाया। वो शेर एंड्रोक्लीस का दोस्त बन गया। ऐसे है वो, क्या चीज है वो, जो अंदर में कंपैशन था, जो अंदर में काइंडनेस थी, पॉजिटिविटी थी, सेल्फ कॉन्फिडेंस था, ऐसी बातें थी जिससे वो शेर भी मित्र बन जाता है। मुझे याद आता है कि श्रीमद् भगवद गीता में एक सेंटेंस आता है, आत्मा अपना ही मित्र और अपना ही शत्रु है। पढ़ा होगा आप लोगों ने, आत्मा अपना ही मित्र और अपना ही शत्रु है। अपने मित्र कब है, जब अपनी संभाल करते हैं, और अपना शत्रु कब है, जब अपने को छोड़ देते हैं, केयरलेस हो जाते हैं, कोई ध्यान नहीं देते हैं, तो शत्रु बन जाते हैं। और मित्र हैं जब हम उसको ध्यान देते हैं, अच्छी बातें करते हैं। तो आज का जो आपका टॉपिक है, सेल्फ केयर फॉर केयरिंग फॉर अदर्स, है ना, सेल्फ केयर। डॉक्टर्स बैठे हैं सब, है ना, तो डॉक्टर्स की बातें करें तो अच्छा होगा ना। तो डॉक्टर्स, ऑब्जर्वेशन है सिर्फ में, एज ले पर्सन, जस्ट ऑब्जर्वेशन। तो मेरी फैमिली भी डॉक्टर्स फैमिली से हूँ मैं, दादा परदादा सब डॉक्टर्स थे। तो डॉक्टर्स में परमात्मा ने बहुत अच्छे गुण रखे हैं, जो आपकी अपनी पढ़ाई के आधार से भी बहुत अच्छी रीत से विकसित हो जाते हैं। लेकिन क्या चीज आ जाती है जिसके कारण से डॉक्टर से लोग डरते हैं। आजकल अलग बात हो गई, डॉक्टर्स थोड़ा डरने लग गए हैं, लेकिन डॉक्टर से लोग डरते हैं, बात करने से डरते हैं। क्या कारण हो जाता है, इसको हम लेंगे आगे चल के। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो चलते हुए हमें अटेंशन रखना पड़ता है, आप इतने डिफरेंट प्रकार के वायरसेस को आप डील करते हैं। वो डॉक्टर क्या, अगर पेशेंट को ट्रीट करते हुए बीमार पड़ जाए, यही सीखते हैं आप लोग। डॉक्टर पेशेंट्स को डील करते खुद बीमार पड़ जाए तो वो डॉक्टर क्या कहेंगे,
कभी कोई डॉक्टर को बीमारी आ जाती है तो हम लोग कह रहे डॉक्टर हो के तुम बीमार हो गया, जैसे कि डॉक्टर को बीमार होना मना है। डॉक्टर बीमार नहीं हो सकता है, लेकिन हो तो जाती है ना, शरीर तो शरीर है ना। अब ये तो फिजिकल कॉस्ट्यूम है हमारा, उसमें तो कुछ गड़बड़ होगी तो थोड़ा बहुत तो हाँ, डॉक्टर में ये होता है उसको जल्दी फास्ट रिकूपरेट कर लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग होती है तो कॉन्फिडेंस भी होता है, सब चीज़ें होती हैं जैसे फास्ट होता है, लेकिन होता ज़रूर है। तो अब जैसे कोविड आया, कोविड में हमने क्या देखा, डॉक्टर्स तो हैंडल कर रहे थे, कौन कर रहा था? डॉक्टर्स तो हैंडल कर रहे थे सब केसेस। तो कोविड में पीपीटी, आप अपनी ड्रेस पहनते थे, सैनिटाइज करते थे, मास्क पहनते थे, डबल मास्क पहनते थे, बहुत कुछ करते थे, सो दैट यू रिमेन प्रोटेक्टेड। ऐसे ही हम समाज में रहते हैं। मेडिकल लाइन आपका एक प्रोफेशन है, दैट इज नॉट योर होल पर्सनालिटी, इट इज योर ऑक्यूपेशनल पर्सनालिटी। बाकी और भी तो बहुत सारी चीजें हैं ना, उसमें हमने फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, हर प्रकार की केयरिंग जरूरी है, हर प्रकार की। सेल्फ, जिसको अभी तक आप लोगों को जरूर लेसन मिल गया होगा, सेल्फ मीन्स आत्मा, सोल, उसकी केयर, इसकी केयर होती है, जिसकी केयर भी करना प्रॉपरली जरूरी है। इनफ स्लीप, इनफ रेस्ट, रिलैक्सेशन, ये सब चीजें जरूरी है। लेकिन इससे भी ज्यादा जिससे ये सारी मोटर गाड़ी चलती है, ये है सेल्फ। और ये सेल्फ जब हमारा ठीक है तो बाकी सब चीजें हमारी अंडर कंट्रोल होंगी। मैं ये नहीं कहती हूँ सब चीजें ठीक होंगी, गड़बड़ तो होती है। मान लीजिए आप ठीक हैं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति आपके साथ लड़ने को ही आया है, सोच के ही आया है, और आप उससे बात करके आपको उसका इन्फेक्शन लग सकता है। हम लोग कहते हैं जैसे मानो कोई व्यक्ति आपके सामने आता है, क्रोध में आता है, आप बड़ी शांति में बैठे हो, क्रोध में आता है। ऑफिसेस को आप ऑब्जर्व कर लीजिए, ऑफिस में व्यक्ति आता है, सब लोग ठीक ठाक हैं, और एक व्यक्ति आता है, आते सार उसको गुस्सा चढ़ा हुआ है, कभी कुछ करता है, कुछ करता है, कुछ करता है, सब लोग टॉलरेट करते रहते हैं। आखिर जब वो चिल्लाना शुरू करता है तो सब क्या कहते हैं, भाई देख, बहुत देर से तेरे को हम ऑब्जर्व कर रहा है, सवेरे से तुम ये कर रहा है, अब अपन को संभाल। लिमिट, हमारी लिमिट हो जाती है, उसके बाद हम उसको क्रॉस कर जाते हैं। तो जब मैं सेल्फ केयर की बात करती हूँ तो हमने जो यहाँ सीखा है, मैं आपको बताना चाहूँगी, इस इंस्टीट्यूशन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस सेल्फ केयर को दी जाती है। फॉर इंस्टेंस, मैं अगर गुस्सा करती हूँ तो मैं आपको कहने की शक्ति नहीं रखूंगी गुस्सा नहीं करो। मैं स्मोक करती हूँ, मैं आपको नहीं रोक सकती हूँ। आपको एक घटना सुनाती हूँ, सच्ची घटना है। भारत अपने आप में विश्व गुरु था तो किस कारण से था? भारत की स्पिरिचुअलिटी के कारण से। अलेक्जेंडर द ग्रेट
जब भारत से वापस जाने लगता है तो लोग उसको कहते हैं कि भारत से तुम कोई चीज तो ले चलो। उसने कहा क्या ले जाना है, अपने देश में सब कुछ है। बोला नहीं, भारत के संत बहुत अच्छे हैं, संतों को ले चलो, कोई संत ले चलो। उसने कहा ले चलो। जब तैयारी की तो जंगल में उनको एक संत मिला, साधु, और साधु को कहा ऐसे ऐसे अलेक्जेंडर द ग्रेट आपको अपने देश ले जाना चाहते हैं, आप यहाँ पर इतना शादी रीति से रहते हैं, इतना उसमें हर्मिट में हैं और खाने को भी पूरा नहीं है, पहनने को भी नहीं है, आप चलिए हमारे देश में आपको बहुत। मैं नहीं चाहता, आपको बहुत कुछ मिलेगा, मैं नहीं चाहता। तो गए वो व्यक्ति मंत्री अलेक्जेंडर के पास भी, वो तो चलने को मना करते हैं, कहते मैं चलता हूँ। अलेक्जेंडर खुद आया तो उसने कहा कि आप चलिए, हमारे देश में बहुत कुछ मिलेगा, आप हमारे देश को उन्नत करें। वो संत बोले मैं अपने देश में ठीक हूँ, मैं कहीं नहीं जाना चाहता। कहा कि आपको चलना होगा। तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं सिकंदर हूं और सिकंदर कहता है आपको चलना है। कहा मैं नहीं जा सकता। सिकंदर ना लेने का आदत ही तो था ही नहीं। उसको गुस्सा आया। उसने कहा कि आप नहीं चलेंगे? उसने कहा हाँ, मैं दासों के साथ नहीं जाता हूं। दास अलेक्जेंडर द ग्रेट, और उसको कोई कहे दास तो वो तो भूकंप आ जाएगा। उसको ऐसे गुस्सा आया और उसने कहा दास? उसने कहा हाँ, क्रोध मेरा दास, क्रोध को मैंने जीता हुआ है, क्रोध मेरे दास है और आप मेरे दास के भी दास हैं, क्योंकि इस समय आप क्रोध के वशीभूत हैं। सिकंदर को और जोर से गुस्सा, उसने तलवार निकाली और बोला ये देखिए। उसने कहा खूब देखिए, मैं तेरे 100 टुकड़े कर दूंगा इससे। मैं कर दो, आप मुझे मार ही नहीं सकते, मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं। आप शरीर के टुकड़े कर सकते हैं, मेरे टुकड़े नहीं कर सकते। अलेक्जेंडर की आंखें खुलती हैं। तो मैंने ये बात क्यों बताई? जो सेल्फ केयर है, हम लोग बहुत सुपरफिशियली ऊपर ऊपर से तो सब काम करते हैं। जैसे कोई वृक्ष होता है, अगर उसको कीड़ा लगा हुआ है तो आप उसकी जेनेसिस को देखेंगे ना, कहां से वो कीड़ा आ रहा है, पैदा हो रहा, उसको खत्म करेंगे। हम पेड़ की पत्तियों को काटते रहे, ब्रांचेस को काटते रहे, वो तो नहीं होगा, वो तो फिर आएगा। ऐसे ही सेल्फ केयर माना क्या, किसकी केयर? आत्मा की केयर। मैं आत्मा। अब मैं आपको एक छोटा सा टेस्ट देते हैं। एक सर्कल खींचे, उसमें आप उस व्यक्ति का नाम लिखें जिसको आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। लिखिए। ओके, यस। नाउ सेकंड सर्कल, उसमें उसका नाम लिखिए जिसको आप सेकंड मोस्ट प्यार करते हैं। हो गया? हो गया? अब आप तीसरा सर्कल करिए, उसमें जिसको थर्ड मोस्ट करते हैं।
लिख लिया? Can anyone share? First circle में किसका नाम आया? Can you tell us? मेरा wife का है. Wife का. Number 2. अच्छा. Next. छोटा बेटा है. हाँ? छोटा बेटा है. बेटा. Okay. और then तीसरा? बड़ा बेटा है. बड़ा बेटा. Okay. You must appreciate. He's so truthful. अच्छा. Then anyone else? Huh? Son. Your son. Then Father. father. Wife. Okay. From this side? Father. First, second mother. Father, mother and Wife. wife. Okay. Anyone else? Myself. First circle myself. Second wife. थोड़ा जोर से बोलिए. First circle myself. Me. You. Second? Second my wife and family. Third family. Okay. How many of you wrote your own name? Two. One and you wrote your name, na? दो. ये important है. When you love yourself, you will take care of yourself. We do not love ourselves. I give you second exercise. Can you write 10 positive qualities of yourself? Yes. पेपर पेन है ना सबके पास? जिसके पास नहीं है, किसके पास नहीं है वो हाथ खड़ा करे. आपके पास है? Okay, right. Just write 10 positive qualities about you, yourself. पेपर भी चाहिए. पेपर कोई लेके नहीं आए होंगे ना? ले आओ, ले आओ. हाँ, थोड़ा ले आइए. राइटिंग पैड ले आइए. हो गया? 10 qualities लिख ली. Okay, now can you write 5 those good qualities that others speak about you? Your 5 good qualities
that others speak about you. Okay. Now can you write 7 weaknesses? Your own 7 weaknesses. Okay? If you're done, then kindly raise your hand. Okay, you're still working. Okay. Carry on. Okay? Okay, done? Okay. Still some are working.
Okay? Now I ask you one thing. Tell me truly, आपको पॉजिटिव पॉइंट्स अपने लिखने ईजी लगे या वीकनेसेस लिखना ईजी लगे? वीकनेसेस। औरों के द्वारा सुनी हुई बात ईजी लगी या अपनी निकाली हुई बात ईजी लगी? औरों की। This shows कि हम अपने आप को कितना इग्नोर करते हैं। दूसरे को इग्नोर करते हैं, वो आपको बोल देता है, लेकिन आप खुद को इग्नोर कर रहे हो। Everywhere you are sacrificing yourself. कोई बात नहीं, इसका अर्थ ये नहीं कि I want you to be selfish. No, I just want you to be self-respecting, self-appreciative, self-loving, self-caring. Sacrifice is a good thing. Only a good, careful person can sacrifice. If I am hurt inside, I can't sacrifice. I definitely need malum patti inside. Hence, अपने आप की वैल्यू को आप जानिए। आप कौन हैं? आप जो आपके अंदर है, इतनी सारी ब्यूटीफुल चीजें जो आप करते हो, कौन कर रहा है? योर माइंड। All those beautiful things that we look around are the creation of human mind. Do we care? Do we mind our mind? No. We have a sentence, mind your mind, meaning take care of your mind. There are thousands of thoughts arising in the mind. There are different varieties. And such a creative personality, where is my most of the time going? Wasteful. We are not negative people. I don't believe that we think negative. Negative thinking is there, but we are not into it. But what is really dangerous is wasteful thinking. What is it, wasteful thinking? All those things with which I have no concern at all. Those things which I cannot resurrect. For instance, if something has happened in the past, I cannot bring it back. But I keep thinking about it, and so much of my valuable time, valuable thoughts are being wasted day in and day out. Self-care means converting this waste into best, where I become conscious of my such a subtle energy, which is so creative, intuitive, beautiful, and try to save on it. This saving makes me powerful inside. We are living in a world where challenges upon challenges confront us. We cannot stop the challenges.
We cannot tell the challenges, please don't attack me, don't come before me. No, we cannot. One challenge is over, the second one is ready. When the challenges are so powerful that one after the other they are appearing, I have also to prepare myself, be resilient to face those challenges and convert those challenges into opportunities. In the heart of my hearts, as a young person some time back, I always used to accept and take challenges. आने दो, आएगा तो कुछ काम करेंगे ना, अगर आएगा ही नहीं चैलेंज तो काम कैसे करेंगे? मजा उसमें है चैलेंज आए और हम उसको कन्फ्रंट करें, है ना? विनर कहे मैं विनर हूं, मैं बहुत पावरफुल हूं, लेकिन मैंने कोई टेस्ट नहीं देना, वो तो नहीं होता है ना, टेस्ट देना पड़ेगा ना। मैं बहुत अच्छा बैट्समैन हूं, लेकिन गुगली नहीं खेल सकता, वो तो नहीं होगा ना। आपको गुगली भी खेलनी है, लेग ब्रेक भी खेलनी है, सब प्रकार का खेलना है। तो वो जो इनर रेजिलियंस है वो मुझे बिल्डअप करनी है, so that I am able to capably face those challenges. This develops my capacity to take things as they come. There was one Chinese philosopher, and Confucius. He said, when the old wise men of antiquity, when they wanted to set right their countries, they first thought of setting right their families. When they wanted to set right their families, they first thought of setting right themselves. When they wanted to set right themselves, they designed a formula. They thought of setting right their minds. When they wanted to set right their minds, they designed a formula. Try to see the things as they are. Try to see the things as they are. If I have biases, if I have prejudices, if my mind is conditioned already, I will not be able to see the things as they are. Shall we have one small little question? There is a room. In room, Romeo and Juliet are there. And they were okay. But next morning, when the room was open, Romeo and Juliet were found dead, and vase had fallen down on the TV, papers had strewn all over, and it was full of dust. What went wrong with Romeo and Juliet? How did they die? Yes, any answers? Challenge your assumptions. For each other, they could not control their emotions. They could not control their anger. They fought each other. क्या हो गया था? लड़ाई हो गई, अच्छा। और Their law could not be successful. Their law could not be successful. So that's why they committed suicide. अच्छा, और Someone attacked them. or challenge your assumptions. Romeo and Juliet are the names
of small little fish. जो वाज में थी, वाज में पानी था, उसमें थी, आंधी आई, वाज गिर गया, मछली मर गई। लेकिन जब मैंने कहा रोमियो जूलियट, आप सबका ध्यान शेक्सपियर की तरफ चला गया। ठीक है ना? And I was telling you, challenge your assumptions, challenge your assumptions. Similarly, such things happen. But if I'm stable inside, in self-care, second thing which is most important, that I should remain stable inside, free of influences. If I get affected, I will not be able to face the challenge. So I have to be stable. अगर आपने किसी चीज की जजमेंट देनी है, आपने डायग्नोज करना है, लेकिन यहां माइंड आपका बहुत वेवरिंग है, ये है, ये है, ये है, क्या हो सकता है, वेवरिंग है, आप डायग्नोज नहीं कर सकें। Symptomatically you can do something, you cannot find a real cause. This requires inner stability. How do I bring this inner stability? By giving myself a chance to be in silence in between. And it is a tried and tested thing. It holds good with officers also. Officers, they have to take care of one file, another. लेकिन अगर एक फाइल का असर दूसरी पर आता है तो वो डॉक्टर का जजमेंट ठीक नहीं होता है। इसको हम लोग कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ थॉट्स, which means throughout the day there are a number of thoughts going on in your mind. From time to time, after an hour or two, just sit in silence for 2 minutes. And you will find a solution. Because you are aware of all those lively thoughts that are going on. But all those that are lying dormant, they arise, they appear only when you are in silence. Your intuition, it appears only when you are in silence. अगर आप हर घड़ी एक्टिवली इन्वॉल्व हैं, आपने अपने आप को चांस ही नहीं दिया सोचने के लिए। आप सोचना जब शुरू करेंगे, सोचेंगे भी नहीं। मेरा तो एक्सपीरियंस ये है, आप बहुत ज्यादा हेक्टिक उससे थोड़े से विड्रॉ हो जाइए। यू गो टू वॉशरूम, while you are doing unimportant thing, you are in the washroom and coming out, things strike your mind, solutions strike your mind. This is my experience. Working, go to the kitchen, आंसर आता है। So it means what? आप किसी मशीन को 24/7 लगा के रखें
और उसको कोई आप रेस्पाइट न दें, नतीजा क्या होगा? क्वालिटी ऑफ वर्क विल सफर. Similarly, we are giving 24/7 work to our mind. We never give it little rest, little pause. Give a pause. मोबाइल भी है, देखिए हमारा हैंग हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, या वो ठीक से काम नहीं कर तो क्या करते हैं, कहते भी इसको ऑफ कर दो, एक बार फिर से स्टार्ट करो. Same thing holds good with us. Give yourself little pause and then come back. It brings results. Another thing which I would like to share with you, be cautious of 5 C's. What are those? First one, comparison. Second one, competition. Third one, comment. Fourth one, criticism. And fifth one, I'm just forgetting it. Carelessness, let's add carelessness. Comparison. When I compare myself with others, I get into either inferiority complex or superiority complex. Both are bad. Both are bad. And by comparing myself with others, I shorten myself. I belittle myself. देखा है, अच्छे देखें, बहुतों से हम अच्छे हैं. When you compare, either you belittle or you are up. जब हम ये कहते हैं हम बहुतों से अच्छे हैं, it means what? I build up ego. A big block here, no entry board. No good things from others will enter into my mind. मैं बहुतों से अच्छी हूं ना, तो जो गुण ग्राहक दृष्टि है वो मेरी खत्म हो जाती है. हम महिमा करते हैं दत्तात्रेय जी की. दत्तात्रेय जी हर एक से गुण लेते थे. वो दत्तात्रेय कौन? आप. जब आपकी गुण ग्राहक दृष्टि होगी तो हम उसको स्वीकार करना भी तो चाहेंगे ना, गुण को धारण करना भी तो चाहेंगे ना. दूसरा, कंपटीशन. आई एम नॉट अगेंस्ट कंपटीशन, लेट मी टेल यू. Competition is good in a way that it brings out some special qualities that are lying hidden in you. But competition, when it becomes cutthroat kind, competition when it becomes jealous, then that competition is not good. You know pretty well, due to competition, big industrial houses wiped out. Competition. अपना काम हम करें, अच्छे से अच्छा करें. My experience, I never entered into competition.
अगर कोई आए सामने से, I changed my way. God has given you capacity. God has given you capability. Why should you change your way? And you'll be better off. ठीक है? Don't waste your thoughts. उसने ये किया, मैं ये करूं, उसने ये किया, मैं ये करूं. No, how far will you go? And how long will you be able to do it? Do something else. But how many times you change? Huh? How many times you change? How many times you change your way? A change, Your way. change कर सकते हैं ना? But how many times? How many times? How will you control this? How many times? I tell you one thing. When you start taking a different way, God blesses you with innovations and creativity. You come up with new things. And when new things are there are others who follow you. Small little example from my own, is not a big, as small children we had small examples. I was doing my post-graduation. Somehow my notes, because I used to spend time on my studies, and so I was serious kind of a person taking care of my, because that was the purpose at that time. And in college, students, they are of different variety, bunking classes, going to movies, clubs, this, that. But I was not doing. Now what they used to do, they used to take my notes. Now when everyone is writing the same thing, how will I get better marks? No. It struck my mind, but if everyone is writing same, how will you get? And it was my younger sister who said to me that everyone will do, so you won't get. You very graciously give your notes to everyone, you will suffer. No, suffering is not the word. Again, just before examinations, I would go to the library, find out new things from there, and write those things. Again, you stand out. God will help you. It was never in my mind, it comes from His grace. New things, just change your way. I don't mean to say that all, change your way. Do something else. Same profession, of course you can't be going for something else, but it can be in your behavior, it can be in your attitude, it can be in your relationship, something new. And there again you stand out. It can happen. And the ideas. Huh? And the ideas. That's the idea. Huh? It can happen, no? It can. We need to better our relationships. I was going to talk to you about it. We need to better our relationships with the self, with patients' relatives, with my nurses. How do I work with them? आप थोड़ा सा ये चेंज लाइए, आप देखिए कितनी सक्सेस आपके पीछे आती है. ह्यूमन टच. आप dear doctors, you have ample opportunity to have the blessings of the Almighty and of the people.
डॉक्टर सिर्फ 2 मिनट बात कर लेता है पेशेंट के रिलेटिव से, इट satisfies the patient. ये चीज छोटी छोटी चीजें जिनको ऐड करने से हमारी चीज बेहतर हो जाती है, डेफिनेटली. थर्ड सी कमेंट, अरे 40s में ये कर लिया, मैक्स पीछे रह गया. और अगर हम सिर्फ एक कमेंट दे दें, सो व्हाट, इट मीन्स यू आर देयर वेयर यू आर. आप फॉरवर्ड कैसे जाएंगे? When you keep your eyes open and your minds open to accept things. Okay? Further, criticism. You are from the line of medicine. Criticism, I think it is a good thing. It gives you opportunity to improve yourself. Generally, those who speak good about others, those words are like music to my ears. But criticism, I don't accept. No. Taking care of the self means any criticism that comes, just accept it. Listen to it. If you are doing the same thing what the criticism is saying, try to correct it. If you are not doing that, forget it. Forget it. Yeah? You remember, whenever you did something, your mother always said, no, it can be better, it can be better, it can be better. There's no end to it. Criticism. Then, at times it is not, I agree. At times, this is why I said, when it is not right, when you feel that the criticism that is coming is not you are not doing that, forget it. But when there is something, some inkling, accept it. Accept it. That gives you opportunity to improve. One example, the place where I am in Delhi, Gurgaon, it is 30 acres complex. There are 150 people living there together. And daily, just as we have classes here, daily we have programs over there, daily. Accommodation, etc. Our chief, Dadi Prakashmani, how she is sitting somewhere, so many things are going on. How was she able to know what is going on? She would meet people, just ask them a small little question. Is your accommodation okay? Water, etc., everything, did you get hot water today? She would just find out like this. Same thing I have learned from her, I do that. Wherever our people are there, your food was okay? Spicy, what? Little. And I tell them, if there is anything, I'll be the most happy person to accept it. Because this gives me a chance to better the complex. Similarly, it's a matter of our attitude. It does not mean that we belittle ourselves, no. We are what we are, self-respecting, but simultaneously we have the desire to improve also. Okay? Then, when you take care of yourself, you reduce anxiety. You improve on happiness. You increase your energy.
and your interpersonal relationships become better. What are the things that you will care about? Number one, assess your needs. Assess your needs. Physical, mental, social, emotional, spiritual. Number two, identify your stressors. Identify what causes stress to you. Third, devise self-care strategies. It can be introspection, it can be talking to others, it can be sitting in silence, whatever. Fourth, plan for your challenges. Five, take small steps. Small steps. And four, take time to focus on yourself. Handle your failures. And then be kind to your mind. Be kind to your mind. Generally, what do we say? हिंदी ये मन बड़ा दुस्तर है, मन घोड़ा है, दौड़ता रहता है इधर, ये मन बड़ा चंचल है. Have you ever thought how much work your mind does? Treat your mind like a small baby. Just as when a small child is hurt, what do? Do you scold the child? Do you admonish? No. You take care of the hurt, isn't it? Similarly, take care of your mind. Take care of your mind. How much work it does. Appreciate and empower it. We empower it through silence, through introspection, through traffic control of thoughts, through humor, relaxation, and meditation. There was a patient who was told by the doctor, see, you must relax. The patient asked the doctor, doctor, tell me how to relax. Relaxation. Leaving your mind always open. It works well when it is open. Okay? So, just as when we get ready, we look into the mirror, isn't it? If there is little scar, we want
it to be removed. We don't want that scar to be there. Similarly, there are scars, there are wounds on the soul. Who is going to take care? Me alone. Those times are gone. I find in our own institution, those times, as the population increases, those times are gone. Then we used to sit with our seniors, and seniors used to sit with us for long hours. Now who has time? So I have to take care of myself. Okay? And for this, take little time out. Take little time out. We have time for everything else, but we give no time to ourselves. You must have heard famous anecdote where a person is cutting wood and a man happens to pass by. Say, what are you doing? Cutting wood. Fine. In the evening the man returns and he finds very little wood has been cut. Say, oh man, what are you doing? You worked the whole day and very little wood. Why don't you sharpen your saw? वो जिसे काटते हैं ना, why don't you sharpen your saw? And what was the reply from him? Who has time for it? So the same thing holds good with us also. We are prepared to do everything, but we become very stingy in giving time to yourself. And very difficult to have a meeting with the self. Very difficult. But we have to make it possible. And make it possible, it happens. Okay? Here I would like to put a stop. And I'm indeed happy that you are here from Orissa? Yes. All of you are from Orissa? Yes. Very nice. Huh? Orissa has taken a lead. Taken a lead. Good. So I can see our sister also here from Orissa. If possible, I don't know, you must be flying back. You fly back? Train. Those of you who are going by train or something, I would request, try to make a Nirupma Didi. बैठे निरुपमा बहन ना? निरुपमा बहन, इनको दिल्ली का भी चक्कर लगवा दो. Yes. Delhi, huh? Ahmedabad, Bhubaneswar. Okay. But I take this opportunity to invite all of you, whenever it is convenient, as a group or individual, you are welcome to visit the retreat center there in Gurugram. Okay? Any day, any time. Okay. Om Shanti.